पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर एक दो एग्जाम्पल। तो जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, शो दैट 2n factorial divided by n factorial into n plus 1 factorial is an integer तो ये जो प्रूव करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे और उसका 3 स्टेप है, हम लोग को पता है। तो सॉल्यूशन, लेट pn सच दैट, डिफाइन एज सच दैट, जो भी बोलिए, 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल इज एन इंटीजर। ये मेरा स्टेटमेंट है, राइट। तो स्टेप वन में हम लोग क्या लेंगे, n इक्वल टू n। फॉर n इक्वल टू 1, p1 इक्वल टू, that is 2 into 1 factorial divided by 1 factorial into 1 plus 1 factorial। 2 into 1 that is 2 factorial divided by 2 factorial, that is 1, an integer। 1 तो डेफिनेटली एक इंटीजर है, इंटीजर। तो इसका मतलब द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, therefore the statement is true for n equal to 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, assumption। स्टेप 2, let the statement is true for n equal to m, that is 2m factorial divided by m factorial into m plus 1 factorial is an integer, right। तो फर्स्ट स्टेप हो गया n इक्वल टू 1 के लिए, और ये प्रूव करना है। नेक्स्ट स्टेप हो गया एजम्पशन स्टेटमेंट। थर्ड स्टेप में हम लोग n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। स्टेप 3, we now prove the statement is true for n इक्वल टू m प्लस 1। m प्लस 1 के लिए हम लोग प्रूव करेंगे, राइट। तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर पी m प्लस 1 इक्वल टू 2 into m plus 1 factorial, right, divided by m plus 1 factorial into m plus 2 factorial। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2m प्लस, इसका मतलब 2 इंटू एम प्लस 1, दैट इज 2m प्लस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई m प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू m प्लस 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2m प्लस 2 फैक्टोरियल को 2m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 1 इंटू 2m फैक्टोरियल, राइट। m प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, दैट इज m प्लस 1 इंटू m फैक्टोरियल, राइट। और m प्लस 2 को कैसे लिखेंगे, दैट इज m प्लस 2 इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल। तो इसमें जैसे 2 इधर से कॉमन लेंगे तो m प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो क्या बचेगा, 2 इंटू
2m प्लस 1 इंटू ऊपर में आ रहा है 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये m फैक्टोरियल है ना, m फैक्टोरियल अच्छा इसमें इधर एक m प्लस 2 बचेगा, हाँ m प्लस 2 m फैक्टोरियल इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल। तो 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल इंटू m प्लस 1 फैक्टोरियल, ये एक इंटीजर है, ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर लिए से p, इसका वैल्यू p है। तो क्या बच रहा है, दैट इज 2 इंटू 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 2 इंटू p, right? It can be seen that p is divisible by m plus 2, therefore p m plus 2 से डिविजिबल है, इसलिए क्योंकि 2m फैक्टोरियल, ये जो 2m फैक्टोरियल है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2m माइनस 1 2m माइनस 2 ऐसे करते करते 2 1 तक। तो इसके बीच में एक नंबर जरूर रहेगा, दैट इज m प्लस 2। तो ये डेफिनेटली m प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 2m प्लस 1 बाई m प्लस 2 इंटू पी जो है ये एक इंटीजर ही बनेगा अल्टीमेट, राइट? therefore 2 इंटू 2m प्लस 1 बाई m प्लस 2 इंटू p is an integer, hence proved। मतलब प्रूव हो गया कि 2m फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल इज एन इंटीजर, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, show that n factorial less than n plus 1 divided by 2 whole to the power n for all values of n greater than 1। ये जो सिंबल है ये that means for all values, तो ये भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से प्रूव करेंगे, राइट? और इसमें एक चीज़ है कि पहला जो जितना भी हम लोग एग्जांपल देखे थे उसमें n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि n एक से ज़्यादा वैल्यू है, राइट? सॉल्यूशन, लेट pn डिफाइन एज n फैक्टोरियल लेस देन n plus 1 divided by 2 whole to the power n for all values of n greater than 1। now for n equal to 2, इसमें सिर्फ एक ही चेंज है, n equal to 2 से लेना है। we have p2 2 factorial, that is 2 factorial मतलब 2 less than 2 plus 1 by 2 whole to the power 2। 2 plus 1 मतलब 3, 3 by 2 मतलब 1.5 होल स्क्वायर दैट इज 2.25, राइट? 2.25 ग्रेटर देन 2, इससे ज़्यादा है दैट इज 9/4, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2.25 कोई भी। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। तो जो इंडक्शन का थ्योरम का फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया, उसके बाद एजम्पशन में क्या हम लोग n इक्वल टू m के लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू।
suppose the statement is the result, statement कोई भी कुछ बोल सकते, result is true for n equal to for n equal to m, that is m factorial less than m plus 1 divided by 2 whole to the power m, right। तो ये हम लोग एज्यूम कर लिए कि pm, सॉरी यहाँ पे pm लिखना जरूरी है, pm इक्वल टू ना, सेकेंड स्टेप हो गया। अभी थर्ड स्टेप पे हम लोग n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। देन फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 वी हैव p ब्रैकेट के अंदर m प्लस 1 दैट इज m प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। m प्लस 1 फैक्टोरियल मतलब क्या है, m प्लस 1 इंटू m फैक्टोरियल। भी m फैक्टोरियल इससे छोटा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m प्लस 1 लेस देन m प्लस 1 इंटू m फैक्टोरियल के जगह पे m प्लस 1 बाई 2 इंटू टू द पावर m से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो इसको हम लोग लिखेंगे m प्लस 1 होल टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 to the power m, right, divided by 2 to the power m। Now we have m plus 2 by m plus 1 whole to the power m plus 1 equal to 1 plus 1 by m plus 1 whole to the power m plus 1, दैट इज इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस m प्लस 1 इंटू 1 बाई m प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ग्रेटर देन 2, राइट। एक इनइक्वालिटी है। नाउ वी हैव p of m plus 1 colon m plus 1 factorial less than m plus 1 whole to the power m plus 1 divided by 2 to the power m, which have already proved, जो हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये वाला पोर्शन, तो हम लोग इसमें रिप्लेस कर सकते हैं लेस देन m प्लस 1 होल टू द पावर m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 होल टू द पावर m प्लस 1 divided by 2 to the power m plus 1 into m plus 1 whole to the power m plus 1, that is equal to, ये m plus 1 whole to the power m plus 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा m plus 1 whole to the power m plus 1 divided by 2 to the power m plus 1। तो प्रूफ हो गया। दिस shows that the statement or result is true for any value of n belongs to n, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है, एंड n ग्रेटर देन 1, n एक से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये जो है एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हम लोग दिखा दिए कि इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर में कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी कैसे होता है।